to meditation which OSHO has created with music, and the music helps, and it is 1 hour, and it's 4 stages. The first stage is shaking, and the shaking should come from inside. So one can start with just trying to bend the knees to help it, and then afterwards just help it, and after a little while the shaking should, as I say, just kind of come from inside. So whatever happens is okay. Shake, 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 and the music helps. Ding, 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 ding. Hi guys, so I am at this place called Pod Village. This is 35 km from Pune city, and actually I've come here to this property called OSHO PREM DHAM. It's a nice property, as in you know, यहाँ पे meditation center है. This place is specially for meditation. अगर रिलैक्सेशन के लिए कहीं पे जाना चाहते हो, मेडिटेशन के लिए कहीं पे जाना चाहते हो, दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू. सो लेट्स गेट इनसाइड एंड लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी. सो दिस इज़ द प्लेस राइट बिहाइंड मी. लेट्स गेट इनसाइड. कहां से ना निकलूं, खिड़की से कूद जाते हो. फिर तुम ये थोड़ी देखते हो ये मुख्य द्वार नहीं, जब घर में आग लगी हो. ये खिड़की से कूद रहा हूं, ये शिष्टाचार के विपरीत है. तुम फिर नक्शा थोड़ी पूछते हो कि नक्शा कहां. तुम फिर मार्गदर्शन थोड़ी चाहते हो. तुम फिर रुकते थोड़ी हो किसी से पूछने को. घर में आग लगी हो तो तुम्हारे प्राण ऐसे आकुल हो जाते हैं निकलने को बाहर कि तुम राह खोज लेते हो. सो दिस इज़ द ओशो मेडिटेशन प्लेस. यहाँ पे काफ़ी सारे तरह के मेडिटेशन ये लोग कराते हैं, बट क्या टाइप का होता है, you'll have to come here personally and check it out. Right now I'm gonna show you the place. ये जगह कैसी है. Let's get inside. This is kind of family room for a group of people, along with a chilling area here. And let me show you a beautiful view from this room. Now let me take you to another room. This is for single occupancy. Let me take you to another room. Let's go. It's a nice view from here. And one
bathroom attached. And this auntie who owns the property, ये हमें बिल्कुल घर जैसा फील कराते हम हैं। आंटी के पकोड़े की रेसिपी जानने आए हैं। अपने हाथों से खाना बना के खिलाते हैं। ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती। चलो इन्हें थोड़ा डिस्टर्ब कर लेते हैं। सफाई, बर्तन सारी, वो मेरी बहुत 25 साल पुरानी शांताबाई है। अच्छा, हाँ, शांताबाई। शांताबाई 25 साल पुरानी है बेटा। ओके, वही आ जाती है, वही कर लेती है सारा काम। अभी भी लोग आए थे सैटरडे संडे को, तो वो अब ओशो प्रेम धाम आके कोई मौली स्वामी से ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। ओके, तो मुझे ये जानना था कि ये प्लेस आंटी ने बताया कि इसके पहले कोई नहीं था और आपने ही ये प्लेस को डेवलप किया है और ये सब किया है। आश्रम में रहते थे हम तो। हाँ, आश्रम यहाँ पे ही था। आश्रम कोरे ओके 16 साल तक रहे। ओके, फिर देखा कि ओशो तो है नहीं, हाँ आश्रम का सिस्टम बदल गया। लेकिन ऐसा लगता है कहीं जंगल में रहा जाए, जंगल का मिलेगा। तो फिर एक बिल्डर था, दोस्त था हमारा, ओके उसी की जगह था। ओके। तो उससे हमने कुछ जगह लेकर ये डेवलप किया। हाँ, तो ये प्लेस एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए है? मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए। ओशो के मेडिटेशन करते हैं। ओके, और कैंप होते हैं, एक महीने में एक बार कैंप होता है। कैंप होता है? हाँ, कभी 1 दिन का, कभी 3 दिन का। लाइक कैसे कैंप? कैंप में मेडिटेशन कैंप, मेडिटेशन कैंप। एक दिन में करीब 5 मेडिटेशन ओशो का डिस्कोर्स। ओके, तो वो आप कंडक्ट करते हैं? मैं वो बाहर से आता हूँ। अच्छा, और आंटी ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ठीक है आप? अभी तो कैंसर है ना, हाँ वो बताया आंटी ने। टाइम लगता है उसको। तो थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं क्योंकि मेडिकेशन आपका चल रहा है। तो गेट वेल सून। थैंक यू। The vibe of this place is too positive. एक homely type feeling आती है. You can come here, chill, be with your loved ones. And learn meditation in the lap of nature. If you have any queries, please write down in the comment section below. I'll be more than happy to reply you. I hope you liked the video. I'll see you soon. Until then, stay tuned.